So this is how your Telco AI agent can help you to finish the hours of work in one single click. My advice to you is to design and use them. And more importantly, do not share this secret with your manager. Imagine a telecom engineer entering the office and you know how his morning is going to be. So before he starts working and fixing the broken KPIs, he has to see couple of dashboards, he has to look at the emails, he has to look at the communication channels where he has to correlate everything, right? And at the same time, he has to listen what his manager is saying, right? And he has to use his hands to prepare some decks as well for corporate team members. और अगर मैं कहूँ ये सारे काम आपके लिए कोई very quickly and very efficiently कर दे, तब कैसा रहेगा? You are right, I'm talking about the AI agents. And then you only need to look at the outputs if they are matching the business outcomes, right? So here are the few cases which we can automate, like checking emails, Slack channels, night shift log monitoring, Jira tickets, KPI analysis, and all that. And what I'm expecting out of these workflow automations, I'm expecting summaries. I'm expecting the responses for my emails. I'm expecting quick sync to the night shift log. I'm expecting my analysis and preparation of the CRNs, that too automatically. Make sense? So these all things are possible with the help of workflow automations in telco domain. One thing important here, I don't want to build a giant AI agent which will do all these tasks at once and it needs a huge prompt. I don't want to build that. I will be building the individual AI agent for each of the tasks that is simple and easy to pick up from here. Definitely in the upcoming sessions, we will be building multi-agent orchestration along with the increased level of autonomy. So, right. So if you see on my screen, this is N8N platform and this is so easy platform. यहाँ आप simple से simple and complex से complex workflows, AI agents and any level of complexity you can achieve. So I have built my first case here. If you remember, we wanted to automate the emails. Alright, if you see, I have created many nodes and first is the trigger node which starts on a click. Then I have integrated my Gmail here. Then all emails would be aggregated and combined. And then I have a AI agent at the center. And that is using the LLM, which is Google Gemini. And after analyzing these, it is sending me the summaries over Slack and drafting me the responses in Gmail. And I have two emails already to analyze, right? One of them is emergency kind of email, right? And another one is simple test email. And at the same time, if you see, my Slack channel where I wanted to receive the summaries is like this. Let us run the workflow. Here it is. Right, see, it started and it's analyzing and it's done. Here it is. Let's see how the responses have popped up in my Slack channel. Let us check it. Yeah, see here. It has clearly identified two emails, 200 emails, and one of them as an emergency important one. And it has also drafted a response for my review. And let's see if it has created a draft in the email also. Here it is. Right. See, so it has created a draft in the Gmail as well. I can review in the Slack itself and then I can release it from here. So it makes sense. It's a good automation, right? I think this workflow is worth using because हम जो सुबह सुबह बहुत सारी ईमेल्स पढ़ के उसमें से क्रक्स निकालने की कोशिश करते हैं, वो सारा काम वन क्लिक सिंगल क्लिक में हो गया, जहां हमें सारी ईमेल्स की समरी भी मिल गई, राइट? एट द सेम टाइम वी गॉट द रेस्पॉन्सेज, ड्राफ्ट रेस्पॉन्सेज एज वेल, जिन ईमेल्स का हमें रिप्लाई करना था, राइट? आगे बढ़ते हैं.
इसी वर्कफ्लो में एक केस और जोड़ते हैं, स्लैक चैनल्स के मैसेजेस का, जहां हमें बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस पढ़ने होते हैं ना, उनके लिए भी कुछ ऐसा ही सेटअप करते हैं, इसी में ऐड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। राइट, सो दिस अपर वन इज द ओल्ड वन जो हमने पहले वर्कफ्लो बनाया था, एंड दिस वन इज द न्यू वर्कफ्लो विच आई हैव एडेड टू द ओल्ड workflow itself. Right, so this is all about the Slack channels जहां पर हम सारे मैसेजेस की एक साथ समरी निकालेंगे डिफरेंट चैनल्स की. राइट, सो आई हैव टू चैनल्स, आउटेज चैनल एंड अनदर वन इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. राइट, सो एक चैनल में जहां पर सारी हमारी कॉर्पोरेट की कम्युनिकेशंस आती हैं, जैसे कि इसमें मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि हमें एक क्वार्टर की प्लानिंग करनी है और उसकी डेक मुझे यानी मयंक को बनानी है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. राइट, अगर एंड सेकेंड वन इज आउटेज कम्युनिकेशन, आउटेज एस्केलेशन सॉरी, तो जिसमें एक 50 साइट्स की आउटेज के डिस्कशन हो रहा है और उस पर आगे हमें देखना है कि क्या एनालिसिस करनी है. राइट, सो ये सारे इंपॉर्टेंट मैसेज छूटे नहीं, तो इसके लिए ये वर्कफ्लो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, इन दोनों चैनल्स को हमने इंटीग्रेट कर दिया है और उनको एक एआई एजेंट जो कि एक ऑलरेडी सेम जेमिनाई मॉडल से, जेमिनाई एलएलएम से पास हो रहा है, और उसकी एक समरी मुझे वापस मेरे पर्सनल मैसेज में स्लैक में आ जाएगी. राइट, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्क करता है. मैं अब सेकेंड वाला ही वर्कफ्लो रन करने जा रहा हूं. ठीक है, हियर इट इज. सो सी, ग्रीन मतलब हो गया, एंड ऑरेंज मींस इट्स स्टिल रनिंग. हियर इट इज, इट्स डन. लेट्स सी कि हमें कैसे रिजल्ट्स मिले मेरे वाले में. हियर इट इज. राइट, या हियर इट इज. सो सी, सारी की सारी समरी, सारे चैनल्स जो भी मैंने, जैसे 2 चैनल करे थे, आप ज्यादा चैनल्स भी कर सकते हो, उन सारे चैनल्स में रात भर जितने भी मैसेज आए सारे एक साथ समराइज होके यहाँ आ गए. मुझे सारे चैनल्स पढ़ के फटाफट से उसमें से क्रक्स निकालना या कोई भी मैसेज छूटे नहीं, इस तरह से अगर मैं यूज करूंगा वर्कफ्लो, डेफिनेटली इट इज मेकिंग सेंस फॉर मी. राइट, जो मुझे 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और 30 मिनट लग सकते हैं और इंपॉर्टेंट मैसेजेस छूट भी सकते हैं, ये एक क्लिक में वो सारा काम इसने कर दिया. राइट, ये देखिए मेरे पे क्या एक्शन पेंडिंग है या क्या स्ट्रेटेजी है, सारा कुछ एक समरी, प्रॉपर समरी बना के इसने दे दी. ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये सारे जो वर्कफ्लोज हैं, ये ईमेल्स को फटाफट पढ़ के, स्लैक चैनल्स के सारे मैसेज को फटाफट पढ़ के एक क्लिक में वो भी सारी समरी अगर मुझे मैसेज कर दे रहे हैं, तो क्या बुरा है ऐसे वर्कफ्लोज को यूज करने में. राइट, इट इज वर्थ यूजिंग सच वर्कफ्लोज. राइट, सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि हमें करना क्या है, मींस हम किस तरह के वर्कफ्लोज को ऑटोमेट कर सकते हैं. आई थिंक सब कुछ मेक सेंस. सो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखो तो ये वही वाला वर्कफ्लो है, बस उसमें कई सारे और केसेस मैंने ऐड कर दिए हैं. जैसे ये पहला वाला आप देखोगे अगर, तो दिस इज सेम वन, चेक न्यू 100 ईमेल्स, एंड सेम वे सेकेंड वाला ये यहां पर जो हमने स्लैक चैनल्स के लिए बनाया है, और उसी में मैंने और नीचे केसेस ऐड कर दिए हैं. जैसे ये वाला, आपको वो लिस्ट याद है ना जिसमें हमने रिपीटेटिव केसेस के एग्जांपल्स लिए थे, ये वहीं से सारे एग्जांपल्स मैंने ऐड किए हैं. ठीक है, तो जैसे ये नाइट शिफ्ट वाला, इसमें नाइट शिफ्ट की शिफ्ट लॉग को हम रीड कर सकते हैं और समराइज करके वापस अपने स्लैक पे हम एक पर्सनल मैसेज में मंगा सकते हैं, जिससे हम क्विकली सिंक हो सके कि हमें क्या नाइट शिफ्ट में चीज ध्यान रखने वाली है. राइट, ऐसे ही आप जीरा टिकट्स का भी जो मैंने केस एक लिस्ट में डाला था वो हम ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से फेच जीरा टिकट्स मींस टिकट्स को पुल आउट करेंगे, then it will be summarized and if needed vendor tickets में फॉलो अप भी चला जाएगा, या आप चाहते हो ड्राफ्ट हो जाए, आप उसको रिव्यू करो, ऐसा भी पॉसिबल है. ठीक है, बीच में ये एडिशनल नोट्स हमने पार्सिंग नोट्स लगा रखे हैं. सेम वे मेनी अदर यूज केसेस मैंने यहां पर ऐड करे हुए हैं, जैसे कि वेट अ सेकेंड, हियर इट इज फेच स्लैक केपीआई अलर्ट्स. अगर आपकी वेब हुक्ड वाली केपीआईज भी स्लैक में आती हैं, उनको भी आप एनालाइज कर सकते हो. उसके लिए थोड़ा सा एक एडिशनल सेटअप किया है मैंने, विच इज ऑल अबाउट लोडिंग द रैग सेटअप. ठीक है, मतलब मैंने एक गूगल ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट डाल रखे, उनको मैंने लोड करा के उनको वापस एआई एजेंट से क्वेरी करा के
क्योंकि जो मैं केपीआई एनालिसिस करूंगा वो कुछ मेरे एसओपीज होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या डॉक्यूमेंट्स या ऑप्टिमाइजेशन डॉक्यूमेंट्स, जिनकी मदद से मैं अपनी केपीआई को एनालाइज कर सकता हूं और डेफिनेटली अगेन सेम वे मैं उनके रिजल्ट्स अपने पास मंगा सकता हूं और अगर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं तो उनको मैं पास करा के सीआरएन्स भी बना सकता हूं, राइट। और अगर कुछ इश्यूज हैं, मैं क्रिएट करना चाहता हूं टिकट्स, सो दैट आई ऑल्सो कैन डू, राइट। सो आई थिंक द फंडामेंटल इज क्लियर व्हाट दिस NA10 कैन डू and how we can automate the telco AI use cases. There are other many use cases which are possible to be integrated. So this is how you can also automate all your daily tasks and quickly you can save your couple of hours and complete your task in one click, single click. और ये कोई मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन नहीं है, ये सिंपल एआई एजेंट्स वर्कफ्लोज हैं। अगर आप चाहते हो ऑटोमेशन तो इसका एक नेक्स्ट लेवल भी जा सकते हैं, जहां एक एआई एजेंट सुपरवाइजर या ऑर्केस्ट्रेटर होगा विच विल बी टेकिंग द कॉल्स एंड डिसीजंस ऑन इट्स ओन। अभी तो हमने एक फिक्स्ड वर्कफ्लो बनाया है, लेकिन आप ऐसा भी आर्किटेक्चर बना सकते हो जहां पर एआई एजेंट ही डिसाइड करेगा कि क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। मेक सेंस? I would say this is a good starting point because you are still controlling the workflow. You are still having the reviewing authority. And at the later stages, you can make them more autonomous. If you see, dragging and dropping the notes is not that important. Important is you have the understanding of workflow in telecom. And at the same time, you have upgraded yourself into AI automations, AI knowledge. So the future belongs to those who have both telecom knowledge plus AI upgraded knowledge and skills. So this is how your telco AI agent can help you to finish the hours of work in one single click. My advice to you is to design and use them. And more importantly, do not share this secret with your manager. Alright, so this video was all about automation, workflow automation. Do let me know in the comments if you want a detailed video on how to build such workflow automations. Or let me know if you want me to build a highly autonomous architecture of such workflows. I'm curious which workflow you would be automating first. Let me know in the comment section. See you in the next video. Till then, take care.